हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मेरा नाम है विजय, मेरे साथ है रिचेश। और आज फिर से हम एक वीडियो देखेंगे और जो वीडियो का टाइटल है वो है माई लाइफ इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 10 अनएक्सपेक्टेड डिफरेंसेस। ओके। तो ये 10 ऐसे डिफरेंसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे इनके लिए इंडिया पाकिस्तान को देखने के बाद, क्योंकि काफ़ी हद तक कल्चर वगैरह सेम सिमिलर है उसके बावजूद 10 ऐसे डिफरेंसेस जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए। उनको देखते हैं, देखा है इन्होंने। तो चलिए, इस वीडियो का जो है आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके उनके वीडियो को देख सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं वीडियो, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। As you know, India and Pakistan used to be, the same thing for quite a long time. But then, when the British left the region, they eventually became divided into, once again, India and Pakistan. And very unfortunately, the division was, a very, very hard thing for so many people. Until this day, there's quite a few unresolved conflicts there, with Kashmir and other places. And even though, all of those people are really nice and really kind and really awesome, apparently, there's a bit of division still going on, and I really hope that changes in the future. However, I've spent quite a few months traveling all around India, and I just finished traveling 10 days all around Pakistan. So I feel like I have a pretty decent idea of how different those two countries are and how different their people are. Today I actually want to compare them and talk about the 10 unexpected differences of my life in Pakistan versus India. Let's go. Difference number 1 is beeping. I don't know if you know this or not, but one of the worst things for me in life is when people beep. Now, when you're traveling around Asia, and especially, for example, India, people there beep all the time, especially places like Mumbai, like they beep and they smile and they wave because they just want to say hi or tell you they're there, And actually, when I was going to Pakistan, I expected exactly the same thing. And even though there are some areas of Pakistan where people beep a bit, but in most of the areas, they don't. For example, in Islamabad, right? Like, no one ever beeps. And that was so surprising to me because I never expected it, So even though, once again, those countries used to be the same thing, but the beeping is definitely better on Pakistan's side. So now the score is 1-0. Let's see what happens next. Difference number 2 is vegetarian options. I've been a vegetarian for 7 years now, I think, and actually traveling around a lot of countries in Asia, it's kind of hard to find vegetarian options. But India is one of the best countries in the world for that, because literally every place has vegetarian options, even McDonald's. Are you kidding me? It's insane. And Pakistan's food is great too, but it's very hard to find vegetarian options. So 1 point goes to India. 1-1 now. Let's continue. Number 3 is cleanliness. Obviously, with both those countries, that of course very much depends on where you're going, because some places could be the fanciest places you've ever seen, and some places could maybe be not the fanciest places you've ever seen. For example, in India, cities like Mumbai are actually really good, except for the slums, of course, or Bangalore, or quite a few other places. But most of the time, you would see some trash and this and that, because once again, there's so many people and stuff. But going to Pakistan, of course, there were some places that weren't the best. But if we look at cities like Islamabad, or once again Lahore, and the places in the mountains and stuff, everything was really, really clean there. It was insane. There were signs everywhere saying, don't litter, you'll get fined, and stuff like that. So another point goes to Pakistan. Difference number 4 is religious diversity. As you know, Pakistan is a majority Muslim country, meaning that way over 90% of the people are Muslim there. But India is basically the cradle of pretty much most of the religions in the world, There's millions of Hindu people, millions of Muslim people, millions of Sikh people, millions of Buddhist people, and a lot of Christians and whatnot. So when you're traveling around India, every single day you'll see people from so many different kinds of religions all living together, for the most part peacefully, and I hope that continues. I know that Hindus and Muslims seem to have a few fights here and there, and that's very unfortunate, but I really hope they will solve their differences, hopefully. And in Pakistan, they also have people of other religions, like they have Christian churches, and in the mountains people have their own ancient religions and stuff. But yeah, the majority of the people are definitely Muslim. So another point goes to India.
Thing number 5 is English fluency. So once again, the whole region used to be a British colony for a very long time, and that is why millions and millions and millions of people speak completely fluent English. Traveling around India, I noticed that anyone who goes to like school or university will be completely fluent in English. And actually going to Pakistan, I noticed that it's exactly the same thing. A lot of people speak super fluent English, even no accent and stuff, you know? So the score now is this. Okay, you legend, now that I told you the 5 differences of my life in India and Pakistan, I want to tell you one very quick thing. I recently launched this new really cool channel called Stay Curious, where we make very short educational videos about the beautiful world we live in. And of course, we made some videos about both India and Pakistan, as well as many other countries. So when you're done watching this video, smash the link in the description box down below, check us out, see where life takes you. Thanks so much, let's get back to the video. Difference number 6 is infrastructure. So as you know, because of the problems Pakistan faced in the past, it's not a very touristy country because a lot of people still think it's very unsafe and dangerous and stuff. That being said, their tourism industry is many times smaller than that of India's, because millions and millions of people visit India every single year. And because of that, the infrastructure for a traveler like myself in India is definitely better. The hostels, the hotels, the buses, the trains, and everything is a bit more easier for tourists to use. But at the same time, it's still very much possible to travel in Pakistan, like you saw, I did, and didn't really have any problems. That being said, this one goes to India. Difference number 7 is tourist place aggressiveness. So as you know, if you travel in a country that's very touristy, sometimes the people working with tourists will get a bit aggressive. For example, in countries like Morocco and stuff, like sometimes people grab you by the arm and say, give me €5 because I did something for you, sometimes it gets pretty intense. And so if I compare the aggressiveness in the tourist places of Pakistan versus India, I would definitely have to say that in India, it's a lot more aggressive. Once again, because there's a lot more people. And once again, going to Pakistan, I expected it to be similar, but I've never been scammed even once. In fact, a lot of people would give me things for free or buy me things for free and stuff. No one wanted to take advantage of me as a tourist. Why? Because there's very few tourists, and now they don't have the kind of people that try to take advantage of it. So it's not really a problem of India. It's the fact that there's so many tourists going there, and obviously some people, will want to make maybe more money. That being said, this one goes to Pakistan. Difference number 8 is bus trips. Back in the day, I used to take quite a few different buses in India because I didn't have other transportation options. And if I'm being completely honest with you, it was so bad. Oh my God, dude. It would be so hard because I would always take overnight buses. And in the middle of the night, they would turn on the lights and people would start shouting and screaming and trying to sell you things and waking you up like, hey, you want some water, it was a great experience for me, but me and other foreigners were like, what's happening here? I've never experienced this before, So yeah, so maybe it was just my experience. I don't know, maybe other people have it better, but my experience traveling in buses in India wasn't the best. So now I take either motorbikes or cars or taxis, or trains are actually amazing. And so I did take a few buses in Pakistan as well, and once again expected them to be similar, but actually they were very much different, Because once again, I think there's not a lot of people who are trying to take advantage of tourists because there's no tourists there, And so it was calm and peaceful, and the lights were off, and no one woke us up in the middle of the night. We could do whatever we wanted, So at least me personally, I had a more comfortable experience traveling in buses in Pakistan, but I could have just gotten unlucky. So if you had a great experience of traveling in India by buses, let me know in the comment section down below. I'll apologize 100 times. But that was definitely what I experienced. So this one goes to Pakistan. Ooh, so far Pakistan is winning. Let's see what happens next. Difference number 9 is places to see. As you know, India is a much bigger country than Pakistan. I mean, Pakistan is huge, But at the same time, India is one of the largest countries in the world with the second largest population in the world, over 1 billion people. And because of that, obviously, India has more places to see that are, I guess, a bit more diverse. That being said, this one goes to India. And finally, difference number 10, hospitality. As you know from the people who have been to both Pakistan or India, both those countries are incredibly hospitable. You will get into many situations where people will pay for you, or not ask you for money, or host you for free, or give you foods and actually
force you to eat because they care so much about your health. Like these situations I had in India where people would wake me up in the middle of the night because I was staying in some sort of a shrine, and they would say, no, you have to eat. If you don't eat, you're not gonna be healthy. Come, please have food with us. You know, like these amazing situations. And in Pakistan as well, there would be situations where people would pay for me in restaurants simply because I was a foreigner and they wanted to be nice to me and they wanted to be kind to me. And it was really, really beautiful. And so I have to say that when it comes to hospitality, both these countries are the same, meaning the score is 5-5. Yay! And that's exactly the point of this video. Even though these countries separated, but at the same time, they're both absolutely incredible. They have their differences, they have their similarities, but both of them are really, really, really nice, really beautiful, really awesome places to visit. So if you ever get the chance to go to both, India and Pakistan, just make sure you always look at everything with open eyes, and whatever happens to you, just, treat it as a wonderful experience and learn as much as you can from the wonderful, wonderful, wonderful local people. That's pretty much it. Let me know what you think about these differences in the comment section down below. See you next time. Peace. So अगर बात करी जाए आज के वीडियो में जो उनको 10 ऐसे डिफरेंसेस लगे, अनएक्सपेक्टेड डिफरेंसेस, तो क्या कहोगे आप इस डिफरेंसेस के बारे में? मुझे बीप का तो मैं भी मानता हूँ, जो बीप करते रहते हैं ट्रैफिक्स में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ शोरगुल होता है। ये रोड्स पे जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं तो उस दौरान काफ़ी लोग हॉर्न बजाते रहते हैं, कंटिन्यूसली बजाते रहते हैं। उससे तो हम इंडियंस भी परेशान हैं, खासकर दिल्ली और मुंबई में। इसलिए मुंबई पुलिस ने कुछ टाइम पहले ना वो करा था, रेड लाइट पे वो लगा दिया था टाइमर। हाँ, तो दिल्ली और मुंबई में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अदरवाइज इन दो सिटीज़ को अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, मतलब मेट्रो सिटीज़, थोड़ा कोलकाता भी इसमें आ जाता है, मेट्रो सिटीज़ को 2-3 मेट्रो सिटीज़ को अगर आप छोड़ दें तो आई डोंट थिंक बीपिंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया में। Anyway, अप्रिशिएट करते हैं हम यार पाकिस्तान के लोगों को जो इस चीज़ को समझते हैं कि ये मतलब नहीं, खैर उनके यहाँ क्योंकि उनका इस्लामिक कल्चर रहा है, तो जो आसपास उनके जो क्या कहते हैं मॉस्क वगैरह होते हैं, उनके आसपास वैसे भी बीपिंग अलाउ नहीं होता। तो एक ये भी रीज़न है, बाकी इसके अलावा भी मे भी ये रीज़न हो सकता है, बट स्टिल ये आपके कॉमन सेंस पे भी तो डिपेंड करता है। कॉमन सेंस कि आप अननेसेसरी का बीपिंग या फिर हॉर्न की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब सामने देख रहे हो आप ट्रैफिक है तो आपको इवन हमने ऐसे भी देखा हुआ है कि वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है, साइन बोर्ड लगा होता है, वहाँ पे लिखा है हॉर्न का साइन बुला करके क्रॉस लगा होता है कि यहाँ पे हॉर्न ना बजाएं, ऐसा करके। लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे भी हॉर्न बजाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया हो पाकिस्तान हो, हमें वो काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है जिसके लिखा हो ना करना हो। अगर हमें कोई चीज़ बोले कि बेटा ये नहीं करना, तो वो हम सबसे पहले करते हैं। एनीवे दूसरा जो था एक आई थिंक जो मुझे अनकंफर्टेबल उन्होंने कहा बस को लेकर के, तो जितना मैंने वो वीडियो देखा मुझे इतना समझ में आया कि उन्होंने ज़्यादा जो ट्रैवल किया वो पहाड़ी एरियाज़ में किया, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट अगर पहाड़ों को छोड़ करके अगर मैं बसेस की बात करूँ तो काफ़ी स्मूथली चलती है, इतना पता नहीं लगता। एक और चीज़, ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, और ये वेरी कर सकता है, बदल सकता है, किसी का बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का खराब हो सकता है। हाँ, वो डिपेंड करता है कैसी उन्होंने अपनी जर्नी को प्लान किया था। मुझे हॉस्पिटैलिटी को लेकर के पहले ही था, क्योंकि देखिए हम वैसे भी हमारे यहाँ भी कहते हैं कि अतिथि देवो भव, समथिंग लाइक दैट। तो अगर कोई हमारे यहाँ आता है तो हम उसे वैसे ही आवभगत बहुत करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा मानते हैं बहुत, तो वो तो हमारे कल्चर में रहा, इंडिया और पाकिस्तान हमारे यहाँ ऐसा रहता है। तो बाहर से जब कोई आता है तो उसे हम अलग ही ट्रीटमेंट देते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं बेसिकली। तो हमारे कल्चर में रहा है स्टार्टिंग। बहुत ही रेयर एक आध कोई ऐसा केस आ जाता है कि हमारे यहाँ से टूरिस्ट ना खुश होकर जाए, अदरवाइज टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं तो वो खुश होकर के ही जाते हैं। और इस चीज़ के लिए ना खुश होकर जाए हॉस्पिटैलिटी के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो अलग ही बहुत एक आध रेयर केस में हो जाता है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल 100% रहता है, किसी भी कंट्री का नहीं है वो। तो आप चाहे किसी भी कंट्री में चले जाएँ, चाहे US चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, कहीं पर भी 100% तो कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन हमारे यहाँ का इंडिया पाकिस्तान की जो हॉस्पिटैलिटी है वो कहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी, ये तो बात है। जो हमारे यहाँ के लोग जिस तरीके से आवभगत करते हैं लोगों को, मतलब खिलाते पिलाते हैं, मतलब जिस तरीके से रखते हैं वैसा नहीं मिलता, मतलब कहीं पे भी। एक और चीज़ जिसमें कंपैरिजन नहीं थी कि वेजिटेरियन फूड वैरायटी की, तो उसका तो हमने पहले भी आप लोगों को वीडियो बना के बताया था कि इंडिया में वेजिटेरियन फूड की वैरायटी मतलब बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में नॉनवेज की वैरायटी ज़्यादा हो सकती है, बट उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी मुस्लिम्स। लेकिन वेज की उन्होंने खुद ही बताया कि पूरी दुनिया
वो घूमे हैं तो उनको पता है चला कि इंडिया में जो वेज की जितनी वैरायटी है ना Variety किसी भी कहीं पे कंट्री भी में नहीं। नहीं मिलती, ठीक है। और क्या डिफरेंसेस बताए थे इन्होंने? बीपिंग हो गई, हॉस्पिटैलिटी हो गई, ट्रैवल इन बस हो गया, और डिफरेंस प्लेसेस टू सी, हाँ है ना। तो इसमें भी जाहिर सी बात है इंडिया एक ज़्यादा बड़ा है बड़ा है। तो यहाँ पे ज़्यादा जगहें हैं घूमने वाली, देखने वाली। बट पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में हमने वीडियोस काफ़ी सारी अभी डाली हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, और अगर घूमने चाहें तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें घूमने को। एक और चीज़ जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी इस डिफरेंस में जो मैं भी मानता हूँ वो क्लीनिनेस को लेके थी, क्लीनलीनेस को लेकर, है ना। तो ये आप लोगों को पता होगा शायद कि इंडिया में ऑलरेडी एक कैंपेन चला है बहुत पहले, स्वच्छ भारत अभियान का, तो उसके बाद से चीज़ें बहुत सुधरी हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि शायद अगर मोदी गवर्नमेंट का अगर सबसे बड़ा सक्सेस अगर कहा जाए तो स्वच्छ भारत अभियान कहा जा सकता है। हाँ, और ये एक क्योंकि बहुत ही वो बढ़िया आने के campaign बाद था। अगर हम कहें तो उससे पहले के कंपेयर करें कि कूड़ा कहीं पे भी पड़ा रहता था, अब इतना नहीं होता। ये नहीं कहेंगे 100% स्वच्छ हो गया, बट समहाउ मतलब 50-60% इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से। हाँ, और इस बहुत तरफ काम improvement करने हुई की है। जरूरत भी थी, और हमें अच्छा लगा कि इस तरफ काम हुआ भी है, ठीक है। अब होप करते हैं कि आगे जाके अच्छे से और हो जाए, क्योंकि काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो हुई है इस कैंपेन से। और सेम टाइप की एक कैंपेन इमरान खान साहब ने भी स्टार्ट किया था, जहाँ तक मुझे याद है, ग्रीन पाकिस्तान क्लीन पाकिस्तान, इस तरह से, ठीक है। तो आप मुझे इसके बारे में पता था, आप लोग मुझे करेक्ट करें कि ऐसा था या नहीं था, और उसका क्या मतलब रिजल्ट रहा है अभी तक, ठीक है। खैर वैसे भी हमने पाकिस्तान की जो ज़्यादातर सिटीज़ देखी हैं, जैसे कराची, इस्लामाबाद, ये दो अगर मैं सिटीज़ को कहूँ तो ये दोनों सिटीज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा क्लीन देखी है हमने। एक जहाँ और तक चीज़, वीडियो में मेट्रो सिटीज़ तो आपको इंडिया पाकिस्तान कहीं का भी वो क्लीन होता ही है, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा है कि हम दोनों कंट्री में एक और चीज़ बहुत, उसको प्रॉब्लम कह लो या खास कह लो, मुझे तो समझ ही नहीं आता, मुझे तो प्रॉब्लम ही लगता है वो, कि इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि एक जगह तो आपको ऐसा लगेगा कि यार न्यूयॉर्क जैसे है, मतलब कैलिफोर्निया जैसे है, लॉस एंजलिस सेम जैसे उसी है, सिटी में एक कोना ऐसा हाँ, होगा जहाँ पे झुग्गियाँ हैं, जो जहाँ पे area स्लम होगा, है, ठीक है। और वहीं से नाला बह रहा होगा। तो ये वही डिफरेंस है कि एक जगह मैं कहता हूँ कि जैसे हमारे कंट्री में एक बंदा इतना अमीर है कि टॉप 5 की लिस्ट में है, ठीक है। सेम टाइम गरीबों की लिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ बड़े बड़े अनयूजुअल सा सिचुएशन होता है कि हमारे यहाँ ना, मतलब इस तरह के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जाते जाते इस वीडियो के एंड में, कि मुझे ना इसका रिजल्ट मैं पहले से सोच रहा था कि यार ये क्या देगा, तो मेरे को पहले से, 50-50 मुझे पहले से मतलब अंदाज़ा था कि ये ना 5-5 ही देगा, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि किसी एक ऑडियंस को नाखुश कर दे, ठीक है, या फिर कोई नेगेटिव चीज़ें लेके कोई हेट किसी के मन में आए, या फिर उनको लगे कि अरे हमें हेट करते हैं, ठीक है। मानता मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत कंपैरिजन किया है, बट मेरे को पहले से लग रहा था यार कि ये 5-5 होगा। और जो इन्होंने डिफरेंसेस बताए हैं ना, मेरे हिसाब से ये डिफरेंसेस इतने ज़्यादा वो नहीं है यार, है ना। एक ज़्यादा कुछ हो गया, जैसे क्लीननेस की बात आ गई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, है ना। और जैसे बसेस का डिफरेंस बताया उन्होंने, तो बसेस यार ये आपके पर्सनल जो है ना, जो आपने टूर प्लान किए, हाँ, बीपिंग का कह सकता हूँ मैं दूसरा, बीपिंग का कह सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जिन्होंने अपने पर्सन बताए, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकते हैं, हाँ। है ना। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ प्लान किया हुआ कि इस रूट से जाऊंगा। अब जैसे ये वेज की तरफ ध्यान दे रहे थे, अगर कोई नॉन वेज की तरफ ध्यान देता तो पाकिस्तान को एक पॉइंट देता। एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट था। एनीवे ये जो भी डिफरेंसेस थे देख के मतलब मज़ा भी आया, अच्छा भी लगा कि वीडियो बहुत अच्छी थी, अच्छे से बनाया था इन्होंने, ठीक है। और उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि ये जो उनको डिफरेंस उन्होंने नोटिस किया बेसिकली, ठीक है। जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन्होंने सोचा था जो इंडिया में होगा वही सेम पाकिस्तान में होगा, जो पाकिस्तान में होगा वही यूजुअली लोगों का परसेप्शन भी यही है इंडिया पाकिस्तान को लेकर कि दोनों की कल्चर मिलते हैं, दोनों सिमिलर टाइप के हैं, चीज़ें हैं वो सिमिलर होंगी बहुत। तो उनमें से भी उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली यार कि जो डिफरेंट है दोनों कंट्री में, और होंगी भी, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया हमें अलग होते हुए, है ना। तो कुछ चीज़ें होंगी जो डेफिनेटली अब अंतर होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही आज के। आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर लाइक करके बताएं। जब तक लाइक नहीं करोगे समझ नहीं आएगा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है नहीं। और साथ में कमेंट भी करें अगर आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ आप लोगों को लगता है कि ये मिस हो गया या फिर हम लोगों को नहीं पता तो वो भी बता सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
राइट। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग देखते हैं फिर उसको शेयर नहीं करते, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाते। तो इस पे थोड़ा देखें कि अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप चाहेंगे कि किसी कोई और भी देखे, तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर करें। राइट, चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिलहाल अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।